Well, Asma, you Okay. can begin. Okay. So, Assalamu alaikum everyone. I'm Asma Asif, and my topic was core curriculum. What is core curriculum? It's basically a set जिसमें set of course जिसमें स्कूल या कॉलेज में हम जो core subjects पढ़ते हैं, जो common subjects होते हैं, that is called core curriculum. That includes science, maths, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, जो हर क्लास में हम पढ़ते हैं. अच्छा, अब कोर करिकुलम का क्या होता है कि ये जो है बहुत एक्सक्लूसिव, अलग से नहीं होते हैं. ये कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. जैसे वन का अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं या सोशल स्टडीज, साइंस पढ़ते हैं, तो टू में हम उसका एडवांस पढ़ते हैं, उससे आगे की चीज़ पढ़ते हैं. और वो जो आगे की चीज़ होती है वो पहले से भी पहले वाली लास्ट हमारी जो हमने पढ़ा होता है उससे भी कनेक्टेड होती है. उसके हम टेस्ट वगैरह लेते हैं ताकि हमारी जो है आगे हम किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं थ्रू फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, हमारी जो है प्रोग्रेस चेक की जाती है. अच्छा, कोर करिकुलम का फायदा क्या होता है? कोर करिकुलम का फायदा ये होता है कि ये हमें हमारे स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज देता है हमारे कोर्स से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड. मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इस्लामियत वगैरह, इनके बेसिक ऑल्दो मेजर जो है वो हर एक कोई दूसरा अलग चूज करता है, हर एक का मेजर डिफरेंट होता है, बट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत नॉलेज उसे हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए. तो दैट्स व्हाट कोर करिकुलम डज, कि उसको बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, एक लिमिट तक उसको हर सब्जेक्ट की जो है इंफॉर्मेशन होती है. इन अ नटशेल, कोर करिकुलम जो है स्टूडेंट्स को वहाँ हेल्प करते हैं जहाँ पे वो वीक होते हैं, या जो है उनको उनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है. उनको वैल्यूज, कल्चर वगैरह, कल्चर पर उनके काम करता है. एज अ टीचर हम जो है वो उनके गाइड्स होते हैं कि उन्हें हम गाइड करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं. ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो अलग होता है. उसको पढ़ाने का, उसको असेस करने का जो अंदाज होता है वो डिफरेंट होता है. Core curriculum is basically just a set of knowledge that is common in all grades. So मिस मेरी तो यहाँ पे खत्म हो गई है. Thank you. Does anybody wants to ask anything or add anything in here before we move to the next presentation? No, ma'am, Miss chair. मेरी जी, please. Are there मिस any ये questions WhatsApp or पे if मैं you... शेयर करूँ? जी ये WhatsApp पे मैं शेयर कर दूँ या आपको नहीं, ईमेल आप मुझे करनी है? ईमेल करेंगे, ठीक है, बाद में. Okay, okay. जी, anybody wants to ask anything? मिस मैं हूँ उसके बाद, लेकिन जो है ना मेरी स्क्रीन अगर कोई शेयर कर ले तो बस मैं स्टार्ट कर देती हूँ. जी प्लीज, कोई फरा की प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें. और लाइए फरा प्लीज WhatsApp में मैं स्टार्ट कर देती हूँ. थैंक यू सो मच. चाहिए मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ आपको. All right. So Okay. basically, देखिए, core curriculum is, again I would mention here कि by the time Aisha is like sorry, Farah है या Aisha है? मैम फरा है. ओके, जब तक फरा उनका प्रेजेंटेशन रन होता है तब तक I just want to make clearance here that core curriculum is not basically understanding of all subject. It's a kind of a subject, it's a kind of a curriculum whereby you actually have a core concept और उससे आप सारे सब्जेक्ट्स को लिंक कर रहे हैं. जैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स में उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होंगे. इस तरह से बेसिकली वो कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द पूरा डिवाइस्ड होता है. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट. मैंने ये एग्जांपल पहले भी दी थी क्लास में कि यहाँ पे सब्जेक्ट वॉल्स ब्रेक डाउन नहीं की जाती लाइक जो हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम है उसकी तरह, बट यहाँ पे हम एक कोर कॉन्सेप्ट के अराउंड पूरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं. ठीक है, सो anybody wants to add in anything or shall we move on to Farah's presentation?
यस मैम, मैंने कर दिया शेयर व्हाट्सएप। ओके ओके, तो कोई कर रहा है फरा की प्रेजेंटेशन रन, या शुड आई नीड टू डू इट? मिस मेरे पास आई नहीं अभी तक। ओके, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करी है करिकुलम डेवलपमेंट की। जस्ट 1 मिनट। आई डोंट नो फरा, मेरे पास नहीं आई है। मैं स्टार्ट कर दूं? जी बिल्कुल, कोई जब तक फरा आपकी होती है तब तक हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जी कौन है नेक्स्ट? सोबिया? यस मिस। सोबिया प्लीज बिगिन हियर। from my laptop. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, वालेकुम सलाम। बिगिन। ओके Today बिगिन। my topic role of teacher curriculum development। नसाब की तरक्की में यानी करिकुलम की तरक्की में असातिज़ा का किरदार। सबसे पहले इसका देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। करिकुलम के जो प्रोसेस है, एज अ टीचर वन हैज़ टू बी अ करिकुलम डिज़ाइनर, करिकुलम इम्प्लीमेंट एंड अ करिकुलम एवलेट। इसमें क्या है, करिकुलम के प्रोसेस में असातिज़ा का जो किरदार होता है वो बतौर उस्ताद किसी को जो है करिकुलम डिज़ाइनर होना चाहिए, करिकुलम का जो है इम्प्लीमेंट करने वाला और उसको जो है जायज़ा लेने वाला होना चाहिए। सबसे पहले जो है टीचर क्या करती है, करिकुलम की प्लानिंग करती है, इसके बाद उसको अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट करती है और उसके बाद जो है उसको एवलेट करती है, उसका जायज़ा लेती है जो कुछ हमने करवाया होता है। ये देखने के लिए कि अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। ये जो एवल्यूशन है ये सिर्फ टीचर की नहीं बल्कि स्टूडेंट की भी हो रही होती है। और इसके अलावा हर रोज़ एक जो टीचर है वो प्लानिंग करता है और उस पर जो है अमल दरामद करता है और उसका अंदाज़ा लगाता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है। टीचर जो है फैसिलिटेट लर्निंग यूजिंग अ वाइड रेंज एंड स्ट्रेटजी बाय प्रेजेंटिंग कंटेंट इनोवेटिव वे कंटेंट को जो है वो इनोवेटिव वेज से पेश करने की जो है वो स्ट्रेटजीज बनाता है। असातिज़ा की जो वसी रेंज होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी सीखने की सहूलत को फराहम करता है। ये है टीचर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, नाफिज कर रहे हैं उसको जो मेकर है, बनाने वाला है, उसका जायजा लेने वाला है एक टीचर। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे प्लानिंग की। असातिज़ा जो है वो नसाब की मनसूबाबंदी में असातिज़ा का क्या किरदार है। तो टीचर अपने तलबा को जो है वो करिकुलम के प्रोसेस में शामिल दूसरों से बेहतर जानते हैं। क्या होता है, वाइल द स्टेट ऑफ्टन डिक्टेट द स्किल कवर बाय द करिकुलम, a teacher can provide insight into a type of material, activities and specific skills that need to be included। उस्ताद जो है वो कंटेंट की जो टाइप्स होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, उसकी मखसूस जो है वो स्किल्स होती हैं, उसके बारे में जो है वो देखता है, उसको जो है वो फराहम करता है, जिनको शामिल करने की ज़रूरत होती है उनके ग्रेड लेवल्स को देखते हुए। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी स्किल्स के मुताबिक जो है वो ताउन कर रहा होता है, उनको जो है यकीनी बना रहा होता है। ये सब इसलिए हो रहा होता है कि सबसे पहले टीचर जो है वो प्लानिंग करते हैं। टीचर को जो है वो लर्नर को क्या क्या ज़रूरतें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्या उनके अकॉर्डिंग मेथड चूज करेंगे, बच्चे उनकी क्लास में किस मेथड के ज़रिए समझ पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होना चाहिए। जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। टीचर बच्चे की जो है वो ज़रूरत को देखता है, उनके इंटरेस्ट को देखता है, इस तरीके से जो है वो मेथड चूज करने के तरीके देखता है जिससे वो अच्छी तरह उसको पढ़ा सके। बच्चों की प्रीवियस नॉलेज देखकर जो है वो टीचर प्लानिंग करते हैं।
लेसन प्लानिंग जो है वो बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, उस तरीके से लेसन प्लान उसको कहा जाता है। और बीएड के स्टूडेंट इसको जो है वो पूरे प्रोसेस को जो है वो करते भी हैं। और टीचर जो है वो बच्चों को रोज पढ़ाता है कि आज हमने क्या पढ़ाना है या कल हम क्या पढ़ाएंगे, सिलेबस किस तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा पाएंगे या नहीं। टीचर करिकुलम को मॉडिफाई करता है, अच्छे तरीके से बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, ताकि बच्चे इस करिकुलम को अच्छे तरीके से जान सकें, बच्चों की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और करिकुलम इसलिए ऐड किया जाता है बच्चों की नॉलेज भी बढ़े और अंडरस्टैंडिंग भी हो। टीचर जो है वो मॉडिफाई करे, और टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक भी जो है वो कमेटी भी जो होती है उसमें भी उनका हिस्सा होता है। और किस तरह बच्चों की साइकोलॉजी जो है वो चेक की जाती है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह होगी, क्या क्या सब्जेक्ट उनके लिए अहम है, क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में डाले जाते हैं, ये सब टीचर की प्लानिंग में शामिल होता है। एक्टिविटी जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो उनकी हो सके। फिर नंबर 2 है टीचर एज करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट। अब जब वो प्लानिंग कर लेता है, प्लानिंग सारी हो जाती है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको लॉगो करना है, सबसे पहले टीचर अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। फिर जितनी नॉलेज होती है, पर्सनल नॉलेज, इसको भी शेयर करती है। इसमें जो है वो असातिज़ा जो है वो करिकुलम तैयार करने वाले, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। उसकी मंसूबाबंदी और उस्ताद का जो है वो बुनियादी किरदार होता है। शख्स जो है वो जो स्टूडेंट टीचर है वो करिकुलम को जो है वो बराह रास्त जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। अपनी जो है वो अगर कोई मीडिया टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किस तरह बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इतना इतना सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, इतने चैप्टर पहले सेमेस्टर में होने चाहिए, दूसरे सेमेस्टर में उसके आगे के चैप्टर होने चाहिए। उस तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है वो सीन्स होते हैं, इन्हें फुलफिल किया जाता है। टीचर भी लेसन प्लान करते हैं, वो भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। और पूरा सिलेबस जो है वो कितने दिनों में ख़त्म करवाना है, इस तरीके से वो प्लानिंग भी करते हैं, और सिलेबस जो है अच्छे तरीके से हो जाए, बच्चों की तैयारी भी हो सके, और प्लानिंग भी इसके पार्ट का हिस्सा है। फिर इन सबको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवाना है। द रोल ऑफ द टीचर, अच्छा इम्प्लीमेंट प्लानिंग हो गई, उसके बाद उसको जो है वो नाफिज किया जाता है, उसके बाद उसका जो है जायजा लिया जाता है। अब टीचर सबसे पहले प्लानिंग की, इसको लॉगो किया और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जायजा लेने के जायजा लेगा टीचर, जो एवलेट करेगा स्टूडेंट को, जितना पढ़ाया है बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। स्टूडेंट भी एवलेट करते हैं टीचर को कि टीचर ने किस हद तक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझाया है। और टीचर को भी देखा जाता है कि टीचर ने भी क्या क्या टीचिंग एड्स को यूज करा, बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मेथड है उसमें, उनके जो है वो मेथड, डिस्कशन मेथड हो गए, डिबेट मेथड हो गए, लेक्चर मेथड है, उसको वेरीफाई किया जाता है किस कॉन्सेप्ट से, किस मेथड से करवाया जा रहा है। हर कॉन्सेप्ट जो है वो ये तो नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कशन मेथड वाला है लेकिन उसको हम लेक्चर मेथड की जगह या किसी और मेथड की तरह हम उसको पढ़ाए जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता। फिर जो है बाद में उसका जो है वो एक होता है टेस्ट, एग्जामिनेशन, इस तरीके से बच्चों को एवेल्यूएट किया जाता है। टेस्ट, बच्चों का एग्जामिनेशन या टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों की, और हमारा कैरिकुलम ये सब देख रहा होता है, ये सब देख के हमारा कैरिकुलम जो है वो बनाया जाता है। फिर इसको इम्प्रूव भी किया जाता है, चेंज भी किया जाता है, और इसको सिस्टम रिवीजन भी कहते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड हो सकें, बच्चों की ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। करिकुलम होता ही इसलिए है कि इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनमें अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो, इसलिए एड करिकुलम भी ऐड होता है। और टीचर का अहम रोल होता है करिकुलम डेवलपमेंट में, कैसे वो सबसे पहले प्लान करता है, इसे इम्प्लीमेंट करता है, और फिर जो है उसको एवेल्यूएट करता है। इस तरीके से जो टीचर है यानी वो मेन रोल अदा करता है करिकुलम डेवलपमेंट में। और ये फिर इसी तरह बताया गया है कि डेवलपमेंट चार्ट के थ्रू के इन्वॉल्वमेंट टीचर का रोल होता है। टीचर जो है वो मुताला करता है, उसका वीक जो है वो मंसूबा स्कीम होती है, वीकली प्लान होते हैं, डेली प्लान होते हैं, इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। थैंक यू।
So anybody wants to ask anything to Sobia, or shall we move on? No, miss, everything is clear. No, ma'am. Okay, so next, who's presenting next? Miss me, Ikra Razak. Okay, Ikra. मिस सामिया को होस्ट बना दीजिए, मैंने उसे अपनी स्लाइड सेंड कर दी है। सामिया आसिफ। मैंने सबको जो है ना राइट्स दिए हुए, 1 by 1 यू ऑल कैन प्रेजेंट, कोई इशू नहीं है। मैंने ठीक है? कर दिया है, इकरा आप चेक कर लो। या Okay. it's there, yeah. ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है मॉडल ऑफ टायलर। नेक्स्ट। टायलर एक अमेरिकन एजुकेटर थे। He was born in Chicago 1902 and died 1994 Feb. He was a founder of Center of Advanced Study in the Behavioral Science. आपने 700 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे और 16 से ज्यादा बुक्स लिखी, बट सबसे ज्यादा फेमस जो आपकी बुक हुई है वो है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इस बुक में टायलर ने अपना टायलर मॉडल पेश किया था, ये वाला जो अभी प्रेजेंट हो रहा है। टायलर मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, क्योंकि आपने इसमें प्लानिंग में बहुत अटेंशन दी है। डिडक्टिव मॉडल है, मींस जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। फोकस ऑन डेटा फ्रॉम स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर। ये मॉडल लीनियर है इन नेचर और ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है और इवैल्यूएशन पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट। टायलर ने अपने इस मॉडल को इन 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। स्टार्ट करता है वो ऑब्जेक्टिव से, फिर वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करता है और फिर सीक्वेंस के साथ उसकी जो कंटेंट होता है उसे सीक्वेंस देता है, देन इवैल्यूएट करता है। नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट स्टेज में टायलर ने अपना मॉडल 4 क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्कूल अचीव करने में कामयाब होंगे? तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए जो करिकुलम ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें सबसे पहले डेटा जो है वो कंटेंट इकट्ठा करना होगा। वो कहाँ से? नंबर 1 लर्नर से, सोसाइटी से और सब्जेक्ट से। 3 सोर्सेज बताए गए हैं डेटा कलेक्ट करने के। नंबर 1 लर्नर, सोसाइटी और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर में वही कंटेंट रखें जिसकी नीड है स्टूडेंट को, मतलब इररेलेवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, लर्नर की एज के रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ये नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पे फोकस किया गया है। थर्ड पे सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखा है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हुए सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, तो फिर ऐसे क्या एक्सपीरियंस दिए जाएं स्टूडेंट्स को जो हमारे जो गोल्स हैं वो अटेंड करने में यूजफुल रहें। तो इस वाले स्टेज में हम लोग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड कर सकें। यहाँ एक्सपीरियंस कंटेंट होता है, मतलब कौन सा कंटेंट हम लोग रखें जो हमारे गोल्स अचीव करने में सक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट। थर्ड स्टेप में हमने जो कंटेंट या लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट किए हैं वो सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज करने होते हैं। इस प्रोसेस को लेसन प्लानिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट। जब गोल सेट हो गए, उनका कंटेंट सेकंड वाले स्टेप में सेट हो गया, देन थर्ड स्टेप में उसकी सीक्वेंस दे दी गई, तो फोर्थ और लास्ट स्टेप में
टाइलर ने इवैल्यूएशन का कहा है कि इस स्टेप में असेसमेंट करते हैं कि जो गोल्स हमने फर्स्ट वाले स्टेप में हमने रखे थे, जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे करिकुलम सेट करते हुए, क्या वो हम लोग अटेंड कर सके हैं या नहीं। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन की जाती है, असेसमेंट की जाती है, और ये है टाइलर का मॉडल ऑफ करिकुलम। थैंक यू। So do we need to ask anything or shall we move on to next? मिस मैं कर रही हूँ फरा, जी, वो फरा मेरी बिल्कुल। पीपीटी सेंड कर दें। Okay, all right. मैम सीमी को ऐड कर ले, वो कह रही हैं। जी मैंने कर लिया है, जो भी लोग वेटिंग कर रहे हैं सबको। Assalamualaikum, ma'am. Can I go next वेलकम after सलाम। Farah? जी आप मेरी पीपीटी सेंड करिए, वो करिए डिस्प्ले, तो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, my name is Farah Kashif. I am 4-year B.Ed 4th semester. My presentation is Hilda Taba model. अच्छा, हिल्डा टाबा एक एजुकेटर थी, उन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया और ये मॉडल जो है उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हिल्डा टाबा 1902 में पैदा हुई और 1961 में इनका इंतकाल हुआ। वो एक आर्किटेक्चर भी थी, एक एजुकेटर भी थी, करिकुलम रिफॉर्मर भी थी, लेकिन उन्होंने जिस फील्ड में सबसे ज्यादा नाम कमाया है वो करिकुलम की फील्ड है। इनका मॉडल बहुत ज्यादा फेमस हुआ और आज भी ये बहुत फेमस है, और इन्होंने अपने मॉडल को 7 स्टेजेस में डिवाइड करा है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इन्होंने जो करिकुलम की जो डेफिनेशन बताई है, वो उन्होंने कहा है कि करिकुलम जो है मतलब उसमें से हम एक वो ब्रॉड होता है, हमने उसमें से जो है कंटेंट सेलेक्ट करना होता है, उसमें से सिलेबस सेलेक्ट करना होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव, उसमें हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको इंडिकेट करना होता है, उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है। अच्छा, ये उन्होंने उनका जो है ये एक मॉडल है, इसको हम 1 बाय 1 नीचे जो है डिफाइन करेंगे। पहली मिस नेक्स्ट करिएगा। जी, पहला स्टेप था इनका डायग्नोसिस ऑफ नीड, कि ये नीड कौन सी हैं, हम इन नीड्स को फाइंड करना है जो हम तालीम दे रहे हैं, इसका हमारे कल्चर पे क्या असर पड़ता है, मुल्क पे क्या असर है पड़ता है, स्टूडेंट की नीड्स, इनकी माशी नीड्स, कंट्री नीड्स, कल्चरल नीड्स, जो मजहब की नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। मतलब डायग्नोसिस नीड में हमने बच्चे की नीड्स फाइंड करनी है कि वो उनकी जो नीड्स हैं वो उसमें पूरी हो रही हैं या नहीं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मिस नेक्स्ट स्लाइड पर आए नीचे। जी, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में अब हमें बच्चे की डायग्नोसिस पता चल गई, नीड्स पता चल गई कि उनकी नीड्स क्या है, हमारी मजहब की नीड्स, उनकी मजहब की नीड्स, माशी नीड्स, जो उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जिसमें हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करने हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा, मिस नेक्स्ट स्लाइड पर आए। थर्ड स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब हमने करिकुलम में से अपना जो कंटेंट सेलेक्ट करना है, उसमें से हमें वो चीजें रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, और जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम अवॉइड करते हैं। सही है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, क्योंकि करिकुलम तो हमारा ब्रॉड होता है, उसमें से हमें खास चीजें सेलेक्ट करनी होती है जो हमें अपने कंटेंट में डालनी होती है। सही है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है कि जो कंटेंट हमने सेलेक्ट करा है उस कंटेंट को हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि सेलेक्ट कंटेंट जो है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि पहले हमें कौन सी चीज रखनी है, पहले आसान चीजें रखनी है, उसके बाद हम एक एक करके मुश्किल चीज पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की एग्जाम्पल ले तो हम बच्चे को पहले काउंटिंग सिखाएंगे, फिर उनको एडिशन सिखाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर मतलब डिवीजन पर आते हैं। सही है, यहाँ पे मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें जाना होता है कि पहले आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। अच्छा, फिफ्थ स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। जब हमारा कंटेंट सेलेक्ट हो गया, जब हमने कंटेंट निकाल लिया कि हमने ये कंटेंट करवाना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी एक्टिविटीज सेलेक्ट करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज हमारे कंटेंट से कहाँ मैच कर रही है, कौन सी एक्टिविटी कौन से कंटेंट से मैच करेगी, कौन से टॉपिक से मैच करेगी। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हमें रखनी होती है, चार्ट एक्टिविटी होती है, पिक्टोरियल एक्टिविटी होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, इसमें मेथड्स भी होते हैं। सही है, जब हमारी एक्टिविटी सेलेक्ट हो जाती है तो फिफ्थ स्टेप पर हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। ये भी इसी तरीके से जिस तरह हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी तरह हमने एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली, अब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे।
कि कौन से टॉपिक से हमारी कौन सी एक्टिविटी मैच करेगी, और जो गैर जरूरी एक्टिविटी होती है उसको हम नहीं लेते। जो जरूरी एक्टिविटी होती है, जो हमारे कंटेंट से, हमारे टॉपिक से मैच कर रही होती है ना, उन एक्टिविटीज को हम फिर अपने टॉपिक वाइज सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप है हमारा एवोल्यूशन। इसके बाद जो है कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है करिकुलम, जब हमने बनाया है वो हमारा कहाँ तक मेजरेबल हुआ, स्टूडेंट्स की नीड पूरी हुई, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो कहाँ तक हमारे कवर हुए, हम इसमें कितने सक्सेस हुए। यानी कि जो एवोल्यूशन के बगैर करिकुलम ये हमारा इनकम्प्लीट है। मतलब इसमें टीचर की एवोल्यूशन है कि मतलब उसने जो बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने कहाँ तक बच्चे समझ पाए, उनकी नीड्स पूरी हुई, यानी 100% नहीं तो 80% हमारी एवोल्यूशन मतलब सक्सेस होनी चाहिए। एंड थैंक यू मैम। All right, so I think we are running out of time. कितनी minutes बाकी हैं? Okay, 9 so we minutes. have still 8 minutes. So I think one person would be able to present if possible. Ma'am, Yes, can I go? Yeah, please go Yes. ahead. जी Okay, बोलें. thank you. Okay. बस कोई और कर रहा है प्रेजेंट? Yeah. I think My name Aisha is is doing, Ismail. right? Yeah. Okay. Actually मिस चलें ठीक है, सही, okay. You want to go first? You can go first. I'm fine with that too. But actually, secondly, and I couldn't make it on time. That's why I came. Okay, आप कर लो. Okay. So my topic was activity-based learning. Learning is more effective when it is an active rather than a passive process. Why would I tell you about learning through activity? You must have seen in your real life that how children learn. एक बहुत ही पुरानी कहावत है that if you tell me something, I will know. But if you show me something, I will remember. But if you are going to make me act on it, I'm going to understand that. So this is exactly what activity-based learning is based on. It's basically an active teaching process in which different types of activities are arranged according to the subject level of the students and the age level of the students, and then they go through those activities in order to learn different processes. Okay, so, and one of the things that you see in this process would be how the child changes and develops according to the activity. The normal activity that we do in the class, like for example, giving the child something to read and then answer the questions, might have an impact about 10%, but not as much as long lasting as any activity is being done. For example, if we go through the germination process, we just tell the students with the picture that this is a germination process and this is how it works. But if you give the students a seed in their hand and then tell them that let's grow a plant out of it, the process that the child will go through and the things that he will see on the way, some of this will be able to, some of them will be able to see it. They will go through a process in which that learning process will change the whole thought process of the child, in which critical thinking and reflective practices even develop in the reflective skills develop in the child. So let's talk about a little bit of history, how this entire thing started. It started after World War II. David Hosberg is considered the pioneer of ABL. He opened a school named Neil Bagh in Kolar. The school has a diverse curriculum, which is included in music, carpentry. They provide students with sewing materials, gardening. They actually give all the activities in hands-on material. The subjects are not exactly the school subjects like math, English, science. They have divided it on activity-based learning. And hence the children learn according to those activities, those skills. They learn things related to maths or science or social studies. This is how the entire process of activity-based learning started. And then after that, research started. People started to review that how activity-based learning is helping. And this is what exactly was found out. The 10% of what you read stays in your brain. You can remember it. But 90% of what you say and do, like if you dramatize it, if you actually act upon something,
it stays 90% and you will remember it over and over again. Even if you ask, if you go through your class only, if a child has done an activity in grade 4, he will remember it in grade 6 or 7 if you review the activity or you do a similar activity. I have myself experienced this in my class when my students ask me, I give them an activity, like for example, last time I was doing rocks and they were testing rocks for finding out whether metamorphic rocks or they were sedimentary rocks. I gave them these chemical. I told them that, you know, you need to pour it on them to find out if whether it's a chemical property or a chemical property or a physical property. These students remembered it because they had actually done a similar activity of testing hardness portion of these rocks in grade 4. So they started telling me, you know, we did this, you know, we did that. So whatever you do, it stays in the memory of the child. And this was actually seen in a research as well. So how do you do at ABL? In ABL, you need to first decide the instructional goals. You need to find out the cognitive level of the child and describe all the characteristics. Then you need to identify the resources that you'll need to arrange for that subject. You need to consider its subject. And then finally, you need to decide that what goals can be achieved in that particular aspect, and then implement the whole thing. So these are some of the ideas in project-based learning. You can go through inquiry, you can go through authenticity, content knowledge, voice of children, and choice. They can be given an activity in which they're given a topic, and then they will research it, and then they'll come up with their voices and speak, have a debate type of competition. Collaborative work, that if you give an activity topic and they can work together in groups. Then feedback and revision. Even in feedback and revision, you can have those small cards and then tell them to write down what they understood, and then you can review them one by one to know whether they have understood the topic or not. So these are some of the activities that you can use in project-based learning. Some of the, and these are some more activities which are explained in a little bit of detail, like for example, educational games. You can enhance them so educational students stay engaged when they are doing something which is related to educational as well as play. So like, for example, you must have heard this quote, which is very common, that I learn through playing. Learning is gameplay. So this is exactly what you'll see when you give them activities in game format. Same way, the problem solving activities, you can give them a problem and tell them a real life problem and tell them now try to solve this problem. Like for example, burglar alarm, you tell them that there's been a robbery over there and how do you solve this, so they can come up with ideas of, you know, protecting the house and making burglar alarms or something like that. Brainstorming activities, which is done normally in our schools and in our classes more often. We keep on asking them questions related to a lot of things, and then we find out their ideas, what they have understood, what they know, and how much do they know. Then debates and arguments. One of the easiest ways that, you know, that you give them some time to research and then they can debate on a particular topic, in which learning takes place because children start to understand perspective of the other person as well. So when you come up with arguments, you come up with evidences, and you start looking up for different type of possibilities. Same way, discovery learning. I gave you the example of germination and projects that we normally do. We ask students to do an investigation or problem. For example, nowadays my students are working on how to reduce how to use renewable energy in different aspects and bigger projects. So right now they're working on how a fertilization process of different plants can be changed and can be where solar energy can be utilized in villages, and how villages can be working on solar energy. Same way, quizzes can be given, role plays. Basically, some students sitting together and becoming and representing that character with those characteristics of different topics. For example, if you can even do role plays in chemistry, like, you know, you give them one chemical each, and then
they can have, they can write down a play, and when two chemicals combine together, how do they react, or what a new product is from a chemical is. So short role plays can an idea to students remember what can happen next. More ideas are okay. So some more educational games or activities can be dramatization, in which you can students can construct an event, a novel, story, and then prepare that and act it out. So remembering events of that particular novel or story becomes easier for the students. Concept mapping is one of the most commonly used in our classrooms nowadays. We give them a small word or a process, and then we start finding hierarchies of different concepts within that particular topic, and then those pictures and a bigger diagram allows the students to understand, and then write a paragraph using that entire mind map becomes easier. And lastly is fieldwork, in which you can take the students to a particular place to understand. For example, if you can take them nowadays, this new science museum opened, and it was a very good experience for the students to see different things from space and different three-dimensional activities that were there. So field trips can help students in understanding a lot of things related to daily life. So like I said, I would like to end my presentation is play is our brain's favorite way of learning. So thank you so much. Any questions? If anybody wants to ask anything to Aisha. Miss, I have a question. Yeah, please. Miss, student-centered curriculum या student-centered learning में और activity-based learning में क्या difference होगा? देखिए, activity-based learning basically एक form of learning where you are doing learning by doing. Student-centered learning could be a very big umbrella. It could be through a number of different ways also. Questioning भी एक student-centered learning का ही हिस्सा है. जब हम Socratic method में जैसे देखते हैं, where the teacher asks certain questions to the students, or students ask question to the teacher, and then they have a debate over it, and then they learn. So वो भी student-centered learning ही है. लेकिन activity-based learning is more about learning by doing, or getting students engaged into some activity whereby they learn on their own. So that's a little fine line between them. Though activity-based learning is a form of student-centered learning only. So this has come from that big umbrella. Okay, ma'am, clear. Ma'am, should I email this presentation to you? Yeah, please email all your presentations. I think this time university has asked us to prepare a portfolio of all the learning things that we are doing. So then at the end of the term, I'll have to submit it. So I think I will need them. Okay. 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 So who's next? Ma'am, may I go next, Hira? Yeah, it was a good presentation, Aisha, and even the rest of you all did well. Thank so you. let's go over to Hira's presentation, और फिर उसके बाद जो next होगा, ठीक है? मेरी turn थी actually. मैं कब से wait कर रही थी? किसकी है next? याकूब की 5th number पे हाँ, थी. sorry, Hira. So can you wait for a minute? Let Kuratulan do it. Sure, ma'am. Sure. Thank you so much, Hira. Okay, Kuratulan. Please आप अपना screen share करें. Thank you, ma'am. अस्सलाम वालेकुम. ओके, मेरा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम डिजाइन, और इससे रिलेटेड मैं आज आपको पूरी बात इन्फॉर्मेशन दूंगी. जो कंटेंट आज हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम डिजाइन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, सबसे पहले नहीं, 2-3 दफा है ना सब्जेक्ट बेस, तो मैम ने एक टॉपिक को 2-3 दिया हुआ, ठीक है? ओके, अच्छा, सबसे पहले तो मैं करिकुलम के बारे में बताती हूँ कि करिकुलम है क्या. करिकुलम एक कंप्लीट एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें वेरियस एक्टिविटीज आती हैं जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारे में
करवाई जाती हैं। करिकुलम पढ़ाई का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, जहाँ तक टाइप्स ऑफ करिकुलम की बात है तो करिकुलम तो बहुत सी किस्मों के हैं, बहुत से काइंड्स हैं, मगर कुछ टाइप्स हैं जिसमें है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इनेक्टेड एंड हिडन करिकुलम। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, जो कि मेरा टॉपिक है व्हाट इज सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम डिजाइन, जिसमें ये बताया जाता है कि हम ये कि इसमें ये चीज समझी जाती है कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो, और उस सब्जेक्ट से मुतालिक तमाम मालूमात हमने बच्चों को देनी है एज अ टीचर। इसके अलावा इस करिकुलम का गोल ये है कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ हम सब्जेक्ट से मुतालिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल बेसिक से लेकर हम आगे की तरफ लेकर जाए, ताकि बच्चों के उस सब्जेक्ट से तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाए। इसके अलावा इस करिकुलम को डिजाइन इसलिए किया जाता है कि तमाम तालीमी इदारों में एक ही लेवल की पढ़ाई पढ़ाई जा सके, जिसमें बच्चों की उम्र, बच्चों का मेंटल लेवल और उनके मयार को देखकर पढ़ाया जाता है। और ये इस करिकुलम का एक ये इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि तमाम इस एज के बच्चे एक तरीके के चैप्टर्स पढ़ रहे हो, एक चैप्टर के एक ही तरीके के कोर्सेज पढ़ रहे हो। अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम के हैं, सबसे पहले इसमें यह है कि इसमें ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होता है, जिसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि लर्नर्स को एक्चुअल जो मालूमात फराहम की जाए वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड हो। हम ये देखते हैं कि फैक्ट करिकुलम पर मेजर जो कंसंट्रेशन करते हैं, तो कॉग्निटिव जो डोमेन है वो लोअर ऑब्जेक्टिव है, जैसे इसमें लैंग्वेज, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग है। इस एरिया पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि एनालिसिस, एप्लीकेशंस और क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग पे इस करिकुलम में थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। इस सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम डिजाइन में हम मेजर जो रोल प्ले करता है वो टीचर होता है। टीचर इसके अंदर क्लास में खुद अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, जो टॉपिक बताया जाता है, जो कंटेंट में होता है, उसी के ही हिसाब से वो टीच करता है। उसमें इंटरैक्टिव क्लासरूम एक्टिविटीज जरा कम होती हैं, जो कि आजकल के जमाने में बच्चे की नीड बनती जा रही है। बस वो मालूमात फराहम कर देता है, बच्चा पढ़ लेता है और टीचर देता है, और बच्चा एक तरीके से बस इसको दिमाग में बिठा लेता है। क्लासरूम में एक्टिविटीज पे फोकस काफी कम है, बेसिकली टीचर ही पढ़ा रही होती है और स्टूडेंट सिर्फ सुन रहा होता है। अच्छा, इस करिकुलम जो डिजाइन में लर्नर्स की नीड पे ध्यान नहीं रखा जाता। आजकल जिस तरीके से अभी आयशा ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि बच्चे आजकल जो जिस तरीके से विजुअल बेस है, एक्टिविटी बेस है, इन चीजों के जरिए जो सीखते हैं वो एक रोड लर्निंग के जरिए नहीं सीखते हैं, और रोड लर्निंग और जो टिपिकल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अरसे तक दिमाग में नहीं रहती है। आपका दिमाग जब नई इन्फॉर्मेशन लेता है तो पुरानी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, लेकिन जब आप एक्टिविटी बेस के जरिए वो चीज करते हैं तो वो आपके जहन में काफी अरसे तक महफूज रहती है। अच्छा, इन हालात में जो ये है, ये इसका करिकुलम रिजिड होता है, इसमें चेंजेस नहीं होती हैं, यूनिफॉर्मिलिटी होती है, जिसमें जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड कंटेंट है, उसी के एक्सपर्ट होते हैं जो उनको रिलेटेड कंटेंट दे देते हैं, वो इससे पढ़ते हैं। यहाँ आपको डाइवर्सिटी नजर नहीं आती, हर बच्चा अलग जहन का है। कोई बच्चा अगर लिखने में अच्छा नहीं है तो वो बोलने में अच्छा है, बोलने में अच्छा नहीं है तो हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, मगर इस करिकुलम में हम वो चीज नहीं देखते हैं। अच्छा, अब जहां तक हम इस एडवांटेज की बात करें कि यहाँ पर एडवांटेज अगर हम देखते हैं तो ये ऐसा है कि इसमें जो बिलो एवरेज बच्चा है वो इसे आसानी से कवर कर लेता है। जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई में वीक है, जिसकी बेस कमजोर है, जिसको पीछे से इतना ध्यान नहीं दिया गया था, वो रोड लर्निंग के जरिए जो कॉन्सेप्ट है वो टीचर ने समझाया और बच्चे ने उसके जरिए क्लास कवर करके वो आगे की क्लासों में चले जाते हैं। इसी तरीके से वो प्राइमरी और देन वो मिडिल में अपनी क्लासेस को क्लियर करता हुआ जाता है। अच्छा, जो स्टूडेंट है
वो टॉपिक से रिलेटेड उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, उनको उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में ग्रिपिंग हो जाती है और उनका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और इसमें जो टॉपिक है उसको फोकस किया जाता है और उसी से ही रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन क्लास में दी जाती है। अच्छा, अब जहां तक हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस में है कि इसमें सिंपल सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम की क्लास होती है, इसमें स्टूडेंट बेस नहीं होती है। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज आर नॉट एक्टिव इन क्लास, इसके अंदर एक्टिव नहीं, इसमें सिर्फ पैसिव लर्निंग होती है। और सिस्टम ऑफ अथॉरिटी जिस तरीके से यहाँ पर टीचर्स के हाथ में होता है या करिकुलम के अंदर जो होता है वो टीचर उस पर पढ़ाने पर मजबूर होता है। लैक ऑफ इंटीग्रेशन होती है क्योंकि इसमें आप ना ग्रुप वर्क करवाते हो ना ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, इस तरीके की कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं, और उनके पास इनफ टाइम नहीं होता है कि वो बच्चों की लाइफ स्किल, बिहेवियर और ये इन चीजों को फोकस करें। उनका काम है सिर्फ पढ़ाओ, पढ़ाकर टेस्ट लो और टेस्ट लेकर सिंपल क्लास आगे कराओ। अब जहां तक हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो बेसिकली इस करिकुलम में एक थ्योरेटिकल मैनर से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है to the learners without any activities, without taking care of the psychology of the learner. Also, there is no other things apart from the teaching the subject. अभी भी बहुत से मुल्कों में इस करिकुलम को पढ़ाया जा रहा है। जो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं उन्हें चाहिए कि वो इसमें चेंजेस लाएं और जो आजकल की सोसाइटी की नीड्स है, जो एनवायरनमेंट्स की नीड है, उसके हिसाब से अपने करिकुलम को प्लान और डिजाइन करें ताकि बच्चे की थिंकिंग, बच्चे की नीड का ख्याल रखा जा सके। Thank you. चलो मैं जो उस ऊपर ओके मैं तुमने मैसेज करो तुम्हारी क्लास। All right, so who's next? Good, Kurtalan, who's next? Ma'am, may I go first? Hira. हाँ हेरा, please go ahead. Kurtalan, आप अपनी स्क्रीन वो कर लें ताकि हिरा can present her screen. Yes, ma'am. मैम कहाँ पे जाकर करूं, मुझे जरा आइडिया नहीं है। प्रिया, हिरा आपको देखें नीचे शेयर स्क्रीन का एक ग्रीन कलर का वो नजर आ रहा होगा। Can you see that? No, ma'am. Actually, it was Kuratalan who was asking. Okay, she's fine now. Okay, chale. Okay. The topic of my presentation is activity-based curriculum design, and I would start with mentioning Aisha's presentation, which was really nice, and it was all about activity-based learning. It gave a very clear picture of what we expect and how to carry out activity-based learning in a classroom. I'll be discussing more about designing a curriculum which focuses on activity-based learning. So starting with curriculum design, as we have been discussing throughout our sessions, that a curriculum does not only mean designing the learning outcomes, rather the curriculum process starts from identifying the needs of the students, the needs of the society, and according to it, suitable aims are suggested, and according to those aims and goals which need to be achieved, we then select the learning outcomes. Different learning strategies, materials, resources, and assessment and evaluation are also a part of the curriculum design. So basically, curriculum design is a holistic plan for the environment where the learning will take place. Now, the activity-based learning is designed just opposite to the subject-based curriculum, which was discussed in the previous presentation. The subject-centered curriculum is designed keeping subjects in mind, and it focuses on building the knowledge of a student according to the learning outcomes which are expected to be met for that particular subject. More focus over there is on the teacher, whereas in the activity-based curriculum, this design is not teacher-centered, rather it is student-centered, and the subject matter is taught
through activities, as it is evident from the name. So basically, activities are used as a means to convey knowledge and skills to the student. The importance of learning by doing. Learning by doing has been given its due importance by all modern educationists. Even Rousseau, who was a naturalist, had his own view of, as mentioned on the screen, that his statement was, instead of making the child stick to his books, I keep him busy in the workshop where his hands will work to the profit of his head. So it is not a very new concept, but it was actually seen through the laboratory school, which was set up by John Dewey. And John Dewey is also an educationist who emphasized on learning by doing. And his statement, activity curriculum is a continuous stream of child's activities unbroken by systematic subjects and springing from the interests and personality felt needs of the child. From this, it is proven that this activity-based curriculum design will be student-centered based on the needs of the child. I will be discussing what is the need of activity-based curriculum. As we know that activity is the natural urge of the child, one of the factors of learning is motivation. Until and unless a student is motivated, he will not be able to grasp the concepts and move on with his knowledge and building of skills. So in this curriculum, activity acts as the major motivational factor, as it is a fun way of learning things, and every child learns very easily and very quickly, efficiently, with the help of different activities which can be included in the curriculum. Also, this activity-based curriculum design helps the children to be active learners in the classroom rather than passive recipients of information. Active learning is also essential for long-lasting learning, long-lasting building of skills. The skill set that is built through active learning will be retained in the long run. So here, it is not that the students will just be told to sit, listen, and note down the lectures. Rather, they will be fully involved in the learning activities. What do we mean by activity? Activity does not necessarily mean physical activity. Rather, intellectual activities can also be used in the classroom in order to implement the activity-based curriculum design, as discussed in depth by Aisha. So I'll be just quickly going through them. We may use different problem-solving games on smart boards. We may simply use real objects, which when shown to the students, it will make the concepts much more clear. Listening to concepts which cannot be actually observed by the student makes it difficult for the student to understand the phenomena going on. Implementing different techniques to help the children visualize the same phenomena and how it goes about in the real life will always help in the child to better understand the concept. Conducting interactive sessions where maybe speakers may be asked to explain different concepts in the classroom, or students may be taking out different field trips and visits to different industries may be arranged, and such interactive sessions will also be a type of activity. Playing puzzles and games, role plays, using videos, project making, all these are different types of activity that may be included in this activity-based curriculum design. The activity-based curriculum is structured around these basic concepts, which are experimentation, where the student learns from hands-on experience, exploration, where the student is given opportunities to collect data, collect samples, make predictions, and draw conclusions through data collected from the surroundings. Also, in this activity-based curriculum, a major concept is of expression. What we mean by expression is that children will be encouraged to express their views, which helps to build their verbal skills. Communication skills are very strongly enhanced if
such activity-based curriculum is used in the classroom, because here there is a lot of collaboration, group work, and interaction. Now, when you're implementing these activity-based curriculum, number of requirements, a few of them we'll be discussing right now. The physical features of the school should be suitable in order to implement this activity-based curriculum. The structure of the school, the available space of the school, building grounds, there should be ample grounds, ample open space available in order to ensure that students get enough opportunities to carry out different activities. And then another very important requirement is the proper training of teachers. Currently, the teachers are not well equipped in the sense of resources as well as in the sense of training. In order to implement this activity-based curriculum, teachers should be properly trained in order to first develop a lesson plan, because in this curriculum, of course, planning ahead is important. What activity will be used in the classroom, how it will be implemented, which resources will be used. So this will need proper training of the teachers. Classroom equipment, resources should be appropriate. Audio-visual requirements should be met. Other resources, materials should be available to the teacher in order to implement this activity-based curriculum. The transportation facilities, in order to ensure that field trips can be organized. Timetable planning, because this activity-based curriculum will be time-consuming, proper scheduling needs to be carried out. The special role of teacher in this curriculum is that teachers will have to engage pupils in activities. They will be the resource person and they will help students to analyze problems. Teachers' role will be to lead discussions, to guide students to work in groups, and to enable students to select their group leaders who will be leading the group work. And this is also an important skill which should be built in students. How to plan and work in groups is also important, which can be learned through this curriculum. The components of activity-based curriculum: every activity must have a definite beginning and ending with a clear objective. The objective should be identified and an appropriate activity should be defined and designed with suitable resources available. The activity must be given to the student with clear, concise, and understandable instructions. And at the end of the activity, the feedback mechanism should be in place in order for the students to understand where the room of improvement is and how can they improve on their concepts. And this the activity should also have a description of the technology or the resources that will be used in that particular activity. As being discussed, the major advantage of implementing activity-based curriculum is that there will be a better understanding of the lesson by the students, as the students will be fully engaged in the lesson. Activity-based curriculum also inspires the students to think critically and build solving skills, which is the need of the time. You know that right now, the students that we need to come out are critical skills, and students should have these skills to take things in their everyday life and be able to solve problems in their lives. Also, a major advantage of this activity-based curriculum is that it helps and supports the learners psychologically, as the learners over here will be free to express their emotions. They will be active learners, they will be working with others, collaboration will be there, which will not only in their cognitive learning, rather than socio-emotional learning can also be ensured. There are a few criticisms on activity-based curriculum design. The most important one is limited resources. The resources that are available to in our country right now, there are very few schools who can afford with having such resources which will be needed in activity-based curriculum design implementation. Another limitation of this curriculum design is that
it needs a long-term planning. The subject-centered curriculum can be very quickly implemented by our teachers, because we can simply go into the classroom, give a lecture, the students simply take down the lecture, and we can conclude our lesson with clear, like just simply summarizing the learning outcomes. Whereas for implementing this activity-based curriculum, long-term planning is needed. Also, in activity-based curriculum, personal supervision is needed. When children are involved in performing the various activities, they need to be supervised in order to ensure that everything goes on smoothly and the activity winds up in time and the expected learning outcomes are achieved. There may be a lack of continuity in the experiences provided if the activities are not designed, planned in a good continuous manner. The interest categories may not be taken care of for preparing the student for the future. The activities may be interesting for the student, but in the long run, the student may not develop skills which are maybe the in that particular field in which he or she works in the professional field. So yes, the activities will ensure the holistic building of the child, but it may also happen that due to this activity-based curriculum, the students are too much involved in the activity and the children may not be able to sit for an examination, which will be at a level a student will have to be prepared to sit for an exam. Hence, this activity-based curriculum design may not be applicable for all stages of education. During middle school and very much applicable in the initial early years, but at higher level, like when we talk about grade 10th, 11th, and then professional colleges, it happens that students need to sit for exams where they need to have some lecture-based concepts also, some learning-based concepts also. So activity-based curriculums must be designed according to the topics where this will be helpful in making the knowledge of the students long-lasting and the skill set will be improved, but at suitable stages. Thank you so much. That was all about my presentation. Okay, so anybody wants to ask anything to Hira? जी. So good. इसके बाद कौन है? Who's presenting next? Miss, should I present? Amreen. Okay. So Amreen, what happened? Basically, we are left with only 10 minutes out here. So what should we do is like we'll take a 5 minutes break और उसके बाद हम वापस आते हैं इसी लिंक को यूज करते हुए and then we'll start your presentation. ठीक है? Okay, miss. एक 5 मिनट का break ले लेते हैं for everybody to like recollect all their energy and then we'll begin with your presentation. Okay? Okay, ma'am. Challenge, great. Thank you, everybody. So I'll just ping a message once the break is over. The students take command. The students take command of their own learning. Teachers are there to provide support, but it is the job of the children to determine the direction of their own.
and they follow their natural curiosities and interest and passions. Basically, student-centered curriculum, the focus is on the child. So it can be, it's actually the learning procedures in which the child will be focused, and all the strategies will be to facilitate the child and the learning of the child. Some of the important features of student-centered curriculum, if we talk about the structure and how it's planned, it's basically more focused on the development of the learner, and more importance is given to the practical life skills and the free expression of the idea. And the whole plan is to develop the whole personality development of a child. And if we look into the objectives, because it's student-centered, so no objectives are planned in advance, and it's formulated on the basis of the needs and the interest of the students. And the objectives are highly flexible because it's catering to the needs and interest and development of students. If you look into the content, content is selected on the basis of the needs, aptitude, age, previous experiences, and ability to learn. And the content will be by which students can learn easily, and it will be up to the aptitude and cognitive levels of the student. Lessons will be written in those words which are in easy language, which the students can understand easily, and rote learning will be discouraged. So there can be activities, there can be some games or technology involved in it. Some of the other ways of learning will be field trips, laboratory experiences, projects, and assignments. There can be audiovisual aids also, because it's actually catering to the original thinking, and it's welcoming the ideas of the students. So it will be basically about the structures of knowledge, how that knowledge can be given or implemented to the students. So the teaching and learning process will be without the time duration. For example, teacher will be involved, but teacher will not be the focus of the learning process. So teaching time or the time of the teacher will be reduced, and more time will be allowed for self-learning. And if the teacher is planning some sort of activity, so it will be based on the nature and the difficulty of the lesson or the activity. This is going to encourage the active interaction between students and teachers, and it will create a positive learning environment, because in student-centered curriculum, environment also plays a very crucial role. And students will only be able to learn in the environment which is positive and which is appropriate and contributing to their learning. Like I mentioned, that audio visual materials and practical demonstrations are used. So teacher use these strategies where students can learn more, and activities help the students to remember the activities or the content for a long run. Students also learn through group activities. So there can be cooperative learning and collaboration. So every team member can contribute to this learning based on the interest. When we are talking about the student-centered curriculum, we are just talking about that it's student-centered and more focus and emphasis is given on the student. But obviously there is a role of a teacher in student-centered curriculum also. The major role of a teacher is a facilitator or a coach, because she is guiding and facilitating and providing support to the students. Students are actually co-creating
the learning activities with the help of the teacher. So teacher is playing a co-creator part over here, and the teacher is working along with the students and accepting the point of view of the students, and she's welcoming the ideas of the students also. Teachers also participate in ongoing professional development, because when you are involved with the students, it's also contributing to your own professional development. Normally, when the teachers are new, they emphasize on their own learning. And later on, when you become experienced as an experienced teacher, your focus also shifted on how your students can learn. So this is the part where your professional development will be ongoing process, because the students will make you learn so many things here. You will be thinking of authentic strategies by which your students can learn, and it becomes very easy for the students to learn. So you will be thinking of all those ways and all those strategies which is contributing and helping the students in learning process. So teacher sometimes uses problem solving skills and engage all the students in learning material, and she can give some sort of case studies, or a discussion method can also be implemented. Evaluation is quite simple. A lot of tools can be used, but I have just mentioned about the self-evaluation, because students are learning through activities and being involved in the groups. So rubrics can be used while the students are working in groups and they are learning. And because the focus is on what they have learned, not on what they have learned, but how they have learned. So evaluation will be more about self-evaluation, that how a child is going towards development. There are several advantages of student-centered curriculum, and since Rousseau, John Dewey have also put great emphasis on this model, so we come across so many advantages. We see positive relationships, and we see that it's catering to the child needs. It's also embracing that the child is fully developing as a positive identity, and students are free. They have freedom to exercise choice in pursuing interests, and they are getting real world experiences. They are sharing their experiences within the group, and they are we are also this is also catering to the competencies of the student. And these activities, the learning process, can be done anywhere, anytime. So it can be within the community, or it can be within the classroom. And since activities are also involved, so it's contributing to the children learning anytime, anywhere, and developing them into a positive learner for the school, home, and for the society. Some of the other advantages are that learning will not be focusing on memorizing and retaining. It will be an ongoing process. It also encourages the students to work together and learn. So being in a team, they automatically learn. Their motivation for learning increases, because this is basically catering to their needs, and they are actively involved, because this is also an active learning process. It helps to build social skills and self-esteem. By student-centered curriculum, by different activities, they are automatically developing social skills and their self-esteem and confidence. Students gain more emotional and cognitive support from their peers while working in the team. We see that each and every individual is supporting each other to work towards the same goal. When we talk about advantages, there are some disadvantages or demerits of a curriculum. So student-centered curriculum has a few disadvantages, or we can say some limitations.
First of all, that because the needs of every individual vary from the other student, so sometimes this becomes difficult. So if learning in alternative ways can be a problem for some of the students depending on their needs. Sometimes students are involved in activities and takes a lot of time, so it takes long time, and there are some certain skills or certain topics that need time to be explained, and sometimes the teacher wants to focus on the essential content and the values. So due to that time, they are not able to do that. They cannot complete the topic within the time. So sometimes if the teacher is explaining something or giving instructions, so there can be a problem of misconception or misunderstanding, because some students are not able to understand. So maybe they misunderstand what the teacher has communicated. अगर क्लास में कोई project हो रहा है, so there can be a possibility that students may not be able to complete that project on the given time. Some students have done it and half of the class is still doing it. So this will take time, and sometimes the students take time in completing the steps and following the steps of a project or any activity. Some students are shy by nature, and some students do not want to be mixed up in groups. So this will be uncomfortable. They will become uncomfortable in the groups, and then you will not see the team skills that you were expecting, and the task will not be achieved, or the objective of that task or the project will not be achieved. So these will be some of the shortcomings or the limitations of this process or this curriculum. Thank you. So great. Okay, Amreen, it was good. Who's next now? Ma'am, can I present? Okay, Samia. उससे Yes. पहले किसी कोई तो नहीं है? I think Samia ही है. उसके बाद I think there's one more person, Bushra. Bushra is not here. I saw her in the beginning. All right, Samia, you go ahead, and if Bushra is not here, then we'll conclude with your presentation. Otherwise, we'll just have hers. Okay, ma'am. Okay. Can you all see my presentation? Yeah, Yes. we can. Yes. Okay. So my topic is Wheeler model. So let me give you a little introduction of him. Wheeler model was an educator of University of Western Australia in 1967, and he developed and extended the ideas of works. So Wheeler model, he has given a definition as well that ma'am, can you all see the presentation? It's paused here. We can see it, Okay. Samia. Is it clear now? Yeah, it is Okay, clear. so it is he clear. said in this definition, the planned experiences offered to the learner under the guidance of the school. इनके मॉडल में इन्होंने 5 यहाँ पे interrelated और cyclic model के ऊपर इन्होंने बात की है. He developed extended ideas and he was influenced by the Tyler. Wheeler curriculum model जो है वो एक cyclic model है, non-linear है, जिधर उन्होंने 5 inter-independent stages के ऊपर बात की है. Aims, goals and objectives, which is the first and the last as well, and which is also interrelated learning experiences, selection of content, organization and integration of learning experiences and content, and evaluation. Aims, objectives and goals.
इन्होंने सेट किया था यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव जो कि हम फर्स्ट और लास्ट दोनों में ही आएगा और वो क्लियरली इंटर रिलेट कर रहा है। यहाँ पे इनका जो एम है करिकुलम एक्सपीरियंसेस का, वो कनेक्टेड है इनके गोल से, ग्रुप ऑफ कंटेंट और पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ करिकुलम से, जहाँ पे इनके गोल्स को प्रेसाइज किया जा रहा है और उनके आउटकम्स में जो है वो क्लासरूम टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शंस आती हैं। सही लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट के ऊपर हम बात करते हैं। इनके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो इज अ एक्टिविटी जहाँ पे लर्नर पार्टिसिपेट कर रहा है और वहां पे इम्पैक्ट कर रहा है बच्चे का बिहेवियर। वहां पे हम एनालाइज कर सकते हैं बच्चे का बिहेवियर कि वो उस एक्टिविटी से, उस लर्निंग एक्सपीरियंस से क्या सीख रहा है। वाई यहाँ पे हम कंटेंट की बात करते हैं, टीचर जो टीच करती है, जैसे कि उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है, इम्पोर्टेंस होता है, वैल्यू, इंटरेस्ट, ये सब कंसिडर्ड किया जाता है, क्योंकि इन सब चीजों से ही हम बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को हम देख सकते हैं और जज तो नहीं कह सकते, बट हम यहाँ पे उसके इवेल्युएट कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे इवेल्युएशन की बात की गई है। इवेल्युएशन वो प्रोसीजर है जहाँ पे हम बच्चे के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे ने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीट किए हैं, कितना ज्यादा उसने जो है वो इंश्योर किया है कि उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स यहाँ पे क्लियर हैं। तो यहाँ पे इवेल्युएशन स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम डिटरमाइन करते हैं। लास्ट में यहाँ पे व्हीलर के करिकुलम मॉडल के ऊपर एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस कि यहाँ व्हीलर मॉडल के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज दैट इट इज व्हीलर और साइक्लिक मॉडल रिप्रेजेंट करता है इस प्रोसेस को, एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, इनकॉर्पोरेट करता है न्यू इंफॉर्मेशन को हमारे करिकुलम में, एंड व्यूज करिकुलम एलिमेंट्स एज इंटररिलेटेड और इंडिपेंडेंट। डिसएडवांटेजेस इनके मॉडल के क्या हैं कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट, and thirdly it is not different from objective model. Wheeler model seems to lack procedure between organizing, integrating learning experience, content and evaluation. तो यहाँ पे इस मॉडल के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं implementation of curriculum के ऊपर। So this was a very precise presentation. I hope everything is clear. If anybody wants to ask any questions, you are open for it. Okay, Samia, good. Is there anybody who wants to ask anything to Samia? Okay, is there anybody who wants to ask any questions to me so far? जो जितना भी आज revision हुआ, I think सिर्फ एक ही नया topic present हुआ है, तो वो I'll cover in Sunday's class. But अगर कुछ अभी तक जो हुआ है उसमें आपको कोई question है, कोई unclarity है, तो please go ahead. No, मिस, बल्कि सब रिवाइज हो गया फिर से। चलें, great. So thank you everybody who presented today and took initiative to start this. I was really worried until yesterday कि ये कैसे होगा, but then alhamdulillah we started making the list और बहुत चीजें clarity से आती गई. So it was a thank you everybody for taking this initiative and starting the presentation today, because I think वो सबको start करने में ही डर होता है कि मैं पहले तो कैसे. So I think that's been done now. So maybe tomorrow. Now I wanted Bushra to take over, but I think उनकी light नहीं है. So maybe then we can end here. और कल थोड़ा सा हम Bushra के session से will start, and then we'll have कल already हमारे I think 12 sessions हैं, 12 slots हैं, I guess. मिस जी मिस, जैसे फाइनल का अभी टाइम टेबल आ गया है, जी। तो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे अभी एग्जाम्स में? बस जो अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया ना, वही टॉपिक्स आएंगे, और जो टॉपिक्स अब मैं संडे को पढ़ाऊंगी वो एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो, और उसका रिवीजन फिर ट्यूसडे को जो प्रेजेंटेशंस होंगी उसमें हो जाएगा, और जो रह जाएगा मैं उसी दिन करवा दूंगी आपको। तो आई थिंक दैट इज इट। मैंने शुरू के टॉपिक्स नहीं लिए हुए, व्हाट इज करिकुलम, फिलोसफी, साइकोलॉजी, वो ओवरडन हो चुका है, हम पहले भी इसको कर चुके हैं, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट, एंड हमने उसको असाइनमेंट में भी किया है, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज। बस जो अभी प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स करने, ठीक है। पेपर मैंने बना लिया है एंड इट्स क्वाइट सिंपल। मींस के ये सब जी
तो ये सारे मॉडल्स BC सब्जेक्ट मैटर करिकुलम ये सब आएंगे क्या? जी, सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन और एक्टिविटी सेंटर्ड डिजाइन, सॉरी स्टूडेंट सेंटर्ड डिजाइन, ये दोनों डिजाइन्स की मैंने आप लोगों को याद है उस दिन पीपीटी भी करवाई थी। सो वो दोनों डिजाइन, सारे मॉडल्स चारों, और जो करिकुलम प्लानिंग वाला यूनिट जो अब हम कर रहे हैं वो बस, ठीक है। सो आई जस्ट आप प्लीज फाइनल टॉपिक्स सेंड कर देंगे। मैं लिस्ट भेजूंगी, डोंट वरी, that will come to you all, don't worry. I think मैं संडे को हमारी जब क्लास हो जाएगी उसके बाद जो भी बची हुई प्रेजेंटेशंस हैं, जो भी चीजें हैं वो सब आपको भेज दूंगी, और उसमें से टॉपिक्स इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कल सुबह आप लोगों को भेज दूं, ताकि एटलीस्ट आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो, और फिर आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस वगैरह भी पूछने हो, सो वी कैन डू दैट, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी जो वीडियोस है वो रन नहीं हो रही थी, सो व्हाट आई हैव डन इज लाइक आई हैव